Hello all. A very warm good evening to everyone. This is Manvija, and I welcome you on the behalf of DSC and ITP and /Developers Club to the fifth workshop of the workshops series organized by HackNITP 3.0. We are live all the way from NIT Patna. As you might be aware, the topic of today's workshop is about open source development. We're privileged to have amongst us the speaker for today's session, Mr. Anuj Garg, sir. We welcome you, sir, to the session. Let me just give you a brief introduction about Anuj, sir. He's the admin of Google Summer of Code at Red Hat. He has been a GSoCer and a GSoC mentor. Anuj, sir, is also the founder of a popular YouTube channel, 𝗏𝗂𝗁, which provides free YouTube courses for all of us. You guys can check out the link of the YouTube channel and his LinkedIn profile given in the description below. So, without wasting our time, let us start today's session. You can put your queries in the chat box, they'll be answered at the end of the show. Over to you, sir. So just 1 second. Okay. So I'm unmuted now. And hello all. Let me just open the second option as well. Yes, now it is good. So you guys can put up your comments. Obviously, I will be responding to a lot of questions at the end of the session, but at the same time, we will love to communicate, because communication is the key when we are discussing something about something great as open sources. So we'll be talking on the very ground level things. Okay, and for that, let me just add up my screen as well so that it is more convenient to talk. Just a second. Uh, Add up my screen as well on the screen. Cool, great. Yep. Okay, so we are talking about open source, and for talking about open source, we have to understand what exactly is open source. है क्या ये चीज, ठीक है? For open source, we understand that there are four key principles for it. Okay, so like if you have a bicycle, the first principle for that is, if that bicycle or that bike or motorcycle is just for you, or it is for everyone, that a lot of people can use it, is it an open or is it closed? Okay, so पहली चीज हमने क्या बोला, open वाला, if you have something for open, what you can say, that anybody can use it, anybody can see it, anybody can see it, then anybody can use it, then anybody can alter it, and anybody can redistribute it. Okay, redistribute. Okay, so like in your bike, you can do these four steps. So you can do these four steps in open source as well for the software part. Okay, now your question would be that why I will work in something, or why I will get the benefit or do something with open source. Okay, so for that we will understand this basic concept. Okay, just 1 second, let me open the browser window for us. You are a developer, or you are in some part software related field, and you want a job. Okay, if you want a job, what you will do, you will probably wait for your college career counselings, or things like that, or maybe you will wait for your TPO for the 4th year, or maybe some internships and things like that, and eventually you will have some resume that you will put there. Okay, but what is in your resume that matters, and what do you have in your resume at the end of the college, or in the 4th year? Generally, okay, so I have done some internships. Okay, what is the proof that you have really learned something? What is the proof that you have really made something? Okay, so if you participate in open source, the first thing that happens is you have a profile that is displayable. Okay, so like there are a lot of open source software that you have heard about. Some of them, if you wish to name, you can put them in the comment section, guys. If you have worked with any open source software, if you have used any open source software like VLC Media Player, you have used VLC Media Player, everybody? Okay, so you can put some software like VLC or something like that that you have used and that you think that are open source. You can put them in the chat section so that I know that you guys have some idea about what I'm talking about. And please take a note that open source and free software are not same.
Okay, like if we talk about Chrome is open source or not? No, Chrome is not open source, but Chrome is free. Okay, so a lot of softwares are free but not open source. Okay, and a lot of softwares are not free but open source. Like we talk about Red Hat Enterprise Linux, that is not open source, but that is, sorry, that is not free, but that is open source. Okay, and we talked about Chrome के केस में क्या है? Okay, Shobit answered Linux. Okay, so yes, Linux is open source. Okay, Bootstrap is open source. Okay, Bootstrap is a library, right? So Bootstrap as a library is open source. We have more answers. Like if you talk about Mozilla Firefox, Firefox is a browser that is open source. A lot of software that you're using are open source. And if you just take a look here, like if you talk about organization Mozilla, we searched it, we got the responses. Like we talk about organizations, users, like persons and organizations both occur in this, like users. We open Mozilla, we see a lot of Mozilla Mozilla as the organization and Mozilla projects here. And if you see just bug this project, you will see that a lot of open issues, a lot of open pull requests, discussions, actions, projects. Okay, so what exactly happen in open source? It provide you some job like behavior. Okay, some job like uh, thought process. Like if you just think, how many of you have this question that I don't know what will exactly happen when I will join a job? Okay, what will happen in the job? Okay, that is a question for a lot of you. You can put in the chat if you had the same question, that you don't know what exactly happened when you join a job, especially a software development job. So here what we will discuss, that will sum up approximately the same thing. Okay, so you're exactly, when you're working with open source, you're getting similar kind of behavior, you're getting the similar kind of atmosphere that you would have got if you were in a software job. Okay, so it is like you're getting the same kind of experience. Some of you have heard that companies now have this expectation that from the beginning you should have a job experience. Okay, but how can I have a job experience before getting the job? So you can get those kind of experience from open source. And how you can get that, like what exactly initially happened in the job, or initially or at any time happened in the job? Okay, so generally there are some meetings. In the meetings they decide, or they provide you the information that these are some future steps that we want to take. Okay, and for that they create a tunnel. Okay, so this is the thing that we will do in this fashion, we will do. And they generally create some setup for that. Okay, and after the setup is done, they create the issues, and issues are divided into different parts. Okay, so one part is that if it is a bug or not. Okay, so if it is a bug, they will put in the bug category. If it is a feature, that they will put in the feature category. If it is a documentation, they will put in the documentation category. Okay, so if you see, new issues have different things related to that, and corresponding to that, they even have different tags, like UI tag, they have feature extraction tag, announcements tag, they have different tags associated to them, and different categories associated to them, right? If that makes sense to you, then what happens next? Okay, so the team, especially if you are in the closed source company environment, what will happen is that your manager will push those issues to you, that this is assigned to you, this is assigned to you. But if you are in the open source environment, what will happen, that someone will either suggest that you can solve this issue, or you can just go there and you can put up the request that I would like to work on this issue. Okay, and someone will assign that issue to you. That makes sense. So if you have got the issue and that issue is assigned to you, then what is the next step that you have to do? You can just you know start working on that and create a pull request for it. That makes sense. You create the pull request. Cool. Let us suppose the pending pull request. Okay, in the pending pull request, you made the changes, you pushed them, and here we can see what are the changes, what are the kind of changes that are kind of a person can do. In the different files, you can add some lines, remove some lines, you can create new files, you can remove some old files. Okay, things like that. And because of that, there are some changes. Okay, and after those changes are done,
you create the pull request, and because of that some basic test cases run there, and they reflect the response for that, and then people provide some reviews to your pull request that this is the thing done right, this is the things done wrong. Okay, and because of that people respond, and after everything is corrected perfectly, if we take the example of a merged pull request, after everything is you know done perfectly fine. Okay, this is about the dab bot, so we will not consider this one. Okay, a lot of pull request by the dependency bot. Yeah, this is from a person. Cool. So what exactly happens at the end? Somebody approves that okay, this pull request is good, and then your pull request get merged. Okay, and after that part is done, the issue get closed. So this is the same behavior that happens. Okay, this is the same behavior that happens in the open source and in the job. Okay, so you're getting while working in the open source, you're getting the same exposure. Okay, you're getting the same thing that you wish to create. Okay, then later comes the next thing. ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि what you can create after this thing is done, that is one point. But जब कर रहे हो उस टाइम पे क्या कर सकते हो? Okay, just tell me if you guys are comfortable with Hindi as well, Hindi plus English or just English. Okay, so you can put in the chat so that I know. And yeah, because yeah, so you guys can respond to that, and at the same time I will take a look at a different awesome website. So a lot of you probably have some knowledge about Google Summer of Code. You can also put in the chat if you have a good understanding of Google Summer of Code, or the basic understanding of Google Summer of Code, what exactly it is. It is an event by Google. Yes, it is. And what exactly happened that every year some of the organizations, like open source organization, if we take an example of last year, like JBoss, Fedora, okay, Blender, a lot of open source organizations take part in Google Summer of Code. So what exactly is the procedure? Okay, the procedure is pretty simple. That initially organizations, organizations apply in Google Summer of Code, and Google selects some of the organizations. Okay, then later on, the students apply in the selected organizations. Okay, they take a look what is the idea list. Okay, so what exactly is the idea list? Idea list are some of their projects or sub projects. Generally they are the smaller module of their existing projects, and student take a look at that, they start contributing, they start understanding from what exactly is happening in that. Okay, and then they create a proposal. Okay, drafting the proposal and getting the review from the mentor is one of the very important thing in that. Okay, so you create a proposal, you get the reviews from the mentor, and you keep on enhancing your proposal. Okay, after your proposal is sufficiently enhanced, you submit that, and some of the people get selected. Okay, from the application produced, some of the people get selected. After that procedure is done, after that application process is done, some of the students will get selected and they will proceed with it. Okay, that is the community bonding period. Okay, so in the community bonding period, what will happen that okay, so in the community bonding period, what will happen that you have some basic like if you are lacking some skill set. Okay, so you can complete that. If you have some lacking information about the person responsible in the community for doing this thing, the person responsible in the community for doing that thing, you can cover up all that part. Okay, and after all that, the community part begins. Okay, the coding part begins. Okay, generally what I suggested that you start coding in this period only. Okay, then there is whole coding period, there are multiple evaluations. Okay, obviously this year there are some changes, and because of that you can see that there is the smaller time for the coding part, because from the last year you can see that there were approximately 3 months, and now approximately 6 weeks only. Okay, so they have halved the time that you put in the coding part. Okay, and they have half the stipend as well. But generally what I suggest that you shouldn't go into Google Summer of Code for the money part. Okay, that is a secondary thing, but obviously that is obviously a nice thing to have, because you're getting a good money and you are getting the stamp from the Google and things like that. But
Yeah, so this year, because a lot of people were having the problem, like they do not have sufficient time, or they do not have sufficient time in the holidays, they get stuck prior or the later part of the, they can you can see internship like thing that Google providing. Okay, so because of that, generally what they did is that they halved the whole time, okay, the coding part. Okay, but this is not the thing that you guys are more you know uh, stressed about. Okay, like in Google Summer of Code, you're not stressed about community bonding period and the coding part. Generally you are stressed more about that, how to do these things, how to get selected into the organization, how to get selected in the open source, how to get selected into Google Summer of Code. Okay, so the first thing that I will tell you for that is that, even though Google Summer of Code is an awesome thing, do not target it for targeting it. Okay, do not just go for Google Summer of Code to do Google Summer of Code. Okay, when I talk about open source, I talk about Google Summer of Code. Okay, but I suggest that do not do Google Summer of Code just for the sake of doing it. Okay, because in that case what will happen, you will bombard yourself for the things, but you will not learn a simple thing. Okay, learning is the very important thing to do when you are talking about something especially open source. Because after your everything in the college is done and you are in the job, okay, generally eventual thing is not Google Summer of Code or things like that. Eventual thing is either job or business that you will be doing. And if you want to have a successful career, maybe in the job or startup, or whatever you want to do, so the first thing in that is that you should be comfortable the topics that you're working in. You should be comfortable in the things that you are doing. Okay, so for that, generally the first thing, especially in open sources, select the organization that suits you. Okay, and for that, generally what you can do is go for the Google Summer of Code archive. Okay, and not this archives. Okay, what happened, archives. Okay, cool. Okay, so then now here you can open any year, any particular year, and you can keep on searching the organizations. Okay, just open any organization, take a look what exactly the information they are providing, like they're just the kind of topics they work in, IRC channel, mailing list, and contact email, and these kind of information are there. So what you can do, you scroll through the list of open source organizations, and you select some organizations that suit your need. Okay, जो तुम्हारे को मजा दे, ठीक है. एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम उन चीजों के पीछे जाओ जो तुम्हारे को मजा देंगी. मतलब बिकॉज सोचो कि इफ आई डू समथिंग दैट इज नॉट सूटिंग मी, मैं उसको कितने लंबे टाइम कर लूंगा. आई विल स्टार्ट विद समथिंग, देन इवेंचुअली आई विल स्टॉप. क्योंकि थोड़ा टाइम किया, मेरे को मजा आया, ठीक है, बट उसके बाद मैं अटकने लग गया, तो मैंने उसको छोड़ दिया. अब इस चीज को हाउ विल यू स्टॉप, हाउ विल यू कीप ऑन पुटिंग द एनर्जी ऑन द सेम थिंग. You will have to align it with your eventual goal. Okay, कि eventual goal क्या है मेरा, मैं लेटर सपोज लाइफ में करना क्या चाहता हूँ, मेरे लिए सक्सेस है क्या, उसको डिसाइड किया. I selected an organization that kind of aligned to that, and at the same time it also aligned to some of my skill sets. Okay, 30% skill set match हो रहे हैं, good, awesome. Okay, 30% skill set good है. You created something जिसमें तुमने उसको एडअप कर दिया, ठीक है, कि हम मेरे पास में स्किल सेट थे, ये चीज थी, अब मैं इसके साथ में आगे बढ़ना चाहता हूँ. ठीक है, अब आपने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर ली. लेट अस सपोज आपने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करी, आपने सेलेक्ट कर ली आर्डिनो. ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे हो, आपको हार्डवेयर में इंटरेस्ट है, एंड साथ में आपने आर्डिनो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर ली. ठीक है, अब आप अगला स्टेप क्या करोगे, आप आइडिया लिस्ट खोलोगे इनकी. सही है, आइडिया लिस्ट, इन्होंने बहुत सारे आइडियाज प्रोवाइड किए हैं. ठीक है, उनमें से लेट अस सपोज तुमने क्या किया कि, सॉरी, अच्छा, इन्होंने इस साल के में अपडेट कर दी है, तो गूगल समर ऑफ कोड ये अभी लास्ट ईयर के करस्पॉन्डिंग इनके में अभी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही. ठीक है, सो that is not generally a lot of organization do. They generally create a separate page for their separate years. Okay, this is the page that they are pointing toward, okay, on the 2021. But okay, yeah, from here you can go to for the project on 2020.
Good. You can see the proposals, you can see the idea lists that they had. Okay, you can see the progresses, and with this information what you can do, इससे मिलेगा क्या तुम्हारे को कि पिछले साल क्या क्या चल रहा था, उससे पिछले साल क्या क्या चल रहा था, उससे पिछले साल क्या क्या चल रहा था. ठीक है, you take the idea, and with the help of that, and especially with the current idea list, you can take an idea, you can take the advantage के अभी मार्केट में क्या चल रहा है, अभी उनके पूरे स्ट्रक्चर में क्या चल रहा है. ठीक है, and with the help of that you can go to their GitHub or whichever platform they are putting their code, और वहां पे जाके तुम थोड़ा सा उसका हाव भाव फीलिंग लेना शुरू कर सकते हो. ठीक है, ये चीज चल रही है, ये चीज चल रही है, मस्त है, मस्त है. ठीक है, ये भी फीलिंग दे रहा है, ये भी फीलिंग दे रहा है, मस्त है. ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू, तुम उस चीज को एज अ यूजर यूज करना शुरू कर दोगे. ठीक है, दिस एप्लीकेशन, मैंने उसको एज अ यूजर यूज करना शुरू कर दिया. अब अगली चीज क्या करोगे, यूजर की तरह कर लिया, अगली चीज है उसको खुद के एनवायरनमेंट में सेटअप करो. ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि लेट अस सपोज मैं विंडोज लिनक्स या फिर मैक कुछ भी यूज कर रहा हूँ, एंड देयर इज दिस कोड, आई विल क्लोन इट, obviously fork it and clone it, then I will run it on my own system. ठीक है, तो ध्यान देना कि जनरली लोग क्या गड़बड़ कर रहे होते हैं, दे इनिशियली असाइन देमसेल्फ एन इशू, शुरू में ही जाके सीधा असाइन कर लेते हैं कि यार इस इशू पे मैं काम करूंगा, बट उससे पहले प्रोजेक्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं हुए होते. ठीक है, बट अगर आप प्रोजेक्ट के साथ पहले कंफर्टेबल नहीं हुए और सीधा आपने इशू ले लिया तो क्या हुआ, इज दैट द राइट थिंग फॉर यू टू डू, तुम्हारा उसमें फायदा है नुकसान है, ऑब्वियसली नुकसान है. नुकसान क्या है कि अभी तुम्हारे पास प्रोजेक्ट में कंफर्ट नहीं है, बट असाइन तुम्हारे को एक इशू हो गया है, तो नाउ यू विल हरी अप, यू विल जस्ट से कि मेरे को डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ना, मेरे को कुछ नहीं पढ़ना, मैं सीधा जाके क्या करूंगा, मैं इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. मगर अब दिक्कत क्या है कि यू विल नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू डू द होल थिंग, तुम सीधा सीधा कुछ झक मारने की कोशिश कर रहे हो, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द स्टफ. ओके, तो एक्सेप्ट ऑफ दैट व्हाट आई सजेस्ट इज कि पहले तुम जाओ और तुम जाके सीधा का सीधा यस ओके, तुम सॉरी, हाँ, सो आई विल सजेस्ट कि तुम जाओ और तुम सीधा उसमें एक कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक आइडिया लेना शुरू करो, एक बेसिक थॉट लेना शुरू करो कि चीजें चल कैसे रही है, हो कैसे रहा है पूरा का पूरा सिस्टम. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हारे को उसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करना, उस प्रोजेक्ट को यूज करना शुरू करना. दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर प्रिटी प्रिटी इंपॉर्टेंट, एंड अगर तुम उस चीज को स्किप कर देते हो कि मतलब नहीं यार ये नहीं करते, सीधा सीधा क्या करते हैं, सीधा जाएंगे इश्यूज को सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी. ओके, तो सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, कि मतलब इसको तुम्हारे को ध्यान में रखना है कि सीधा सीधा मतलब वो नहीं करना शुरू करना कि जंप करना है सीधा कोड पे. ओके, तो वो चीज काफी गड़बड़ हो जाती है. ठीक है, तो इसके बाद में जब तुम्हारा ये वाला चीज हो जाएगा तो अगला टिप क्या रहेगा तुम्हारे पास में कि तुमने ये चीज कर ली, तुमने एक बेसिक आइडिया ले लिया, उसके बाद में फिर आता है इश्यूज के बारे में बात कि तुमने इशू यू यू वांट टू असाइन सम इश्यूज टू योरसेल्फ. सो व्हाट यू विल डू, assign yourself the simplest issue that you can find. And why I'm suggesting to assign yourself the simplest issue, क्योंकि मुश्किल इशू में कुछ और दिक्कत है. ठीक है, सिंपलेस्ट को तुमने ले लिया, तुम उसको कर लोगे. ठीक है, मुश्किल इशू लिया तो क्या होगा, सबसे पहले it will create more code. Okay, generally if it is not a very beginner friendly issue, it will have more code. And what is the problem with more code, that you're not comfortable with the code base, and at the same time you're not comfortable with the standard that you have to follow. Okay, because when you're working with the code, you also have to follow the standards that it is providing. And generally there are some unit test and different kind of test that a particular suite follows. Like I'm opening a random project, and you can see that if I'm opening a random pull request, it has some tests. Okay, these are some different checks. Like they're using Travis, it will showcase some logs. Okay, this is the log. This is the log information for this Travis. So what exactly is happening in this?
What are these? So what exactly is happening, that when this pull request is happening and when this check is happening, it is running the unit test and the things that they have placed in the test, so that they can continue with this pull request. Okay, so generally what initially happen is that you're not comfortable with the standard that particular organization is putting. Okay, और वो एक काफी बड़ा इशू रहता है. So initially अगर तुमने एक बड़ा इशू उठा लिया, तो यू विल गेट स्टक. तुम फंस जाओगे और तुम इस चीज के साथ में आगे नहीं बढ़ पाओगे. ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए फिर कैसे करोगे? बताओ बच्चों, सॉल्व कैसे करोगे इस तरह की चीज को? स्टार्ट विद सिंपलर थिंग्स. डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, यूनिट टेस्ट पे जाओ, बेसिक बेसिक चीजें करो. ठीक है, क्योंकि एक अगर बेसिक आइडिया दूं तो, अगर तुम लेट अस सपोज एक किसी के घर में जाते हो, ठीक है, एंड व्हाट यू डू के मेरे को आपके घर में कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही. ठीक है, आपने पंखा गलत लगाया हुआ है, आपने सोफा गलत लगाया हुआ है. यू कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग. somebody like that? No, they don't. ठीक है, ऐसा किसी को पसंद नहीं होता कि तुम उनके बारे में हर चीज में जाके कि नहीं यार ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, एवरीथिंग इज रॉन्ग. नहीं, वो चीज नहीं चलेगी. बट क्या चलेगा कि तुम गए और तुमने लेट अस सपोज क्या किया, मतलब यू लाइक अ पर्टिकुलर स्मेल, तुमने स्मेल के उनको फ्लावर्स दे दिए. एवरीबडी लाइक फ्लावर्स. ठीक है, तुमने फ्लावर्स दिए, यूज दोस फ्लावर्स एंड इट इज गुड. ठीक है, और तुम्हारे को और कॉम्बिनेशन उनसे बैठाना है. ठीक है, तुमने क्या किया, तुमने कहा कि यार चाय पीते हैं चलो. उन्होंने चाय बनाई, तुमने अपने भी बर्तन धो दिए, उनके भी बर्तन धो दिए. ऑसम चीज है. मतलब ये चीज फीलिंग क्या दे रही है, ये फीलिंग दे रही है सिंपली कि जस्ट डू थिंग्स फॉर देम दैट मेक देम फील केयर्ड. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि सोचो कि तुमने लेट अस सपोज तुमने उनके चाय के बाद बर्तन धो दिए, तो दे विल बी लाइक कि यार ये बंदा सही है, मेरे को जो है ना रोज इसी बंदे के साथ चाय पीनी है. ठीक है ना, मतलब क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल काम क्या हो जाता है कि यार सब काम हो जाता है मगर बर्तन नहीं धुलते. ठीक है ना, अब उसको तुमने 10 दिन तक किया. ठीक है, कि रोज बंदे के साथ पिए, चाय पी, बर्तन धो दिए उसके, अपने बर्तन धो दिए, उसके बर्तन धो दिए. अब 10वें दिन तुम कहोगे कि यार मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, साथ में चलेगा क्या? तो सामने वाला बंदा उसको हाँ भर देगा नहीं कि यार सही बात है यार, तू अपना दोस्त है, तू रोज हेल्प कर देता है, तेरे को चल आज 1 घंटे का काम है, तेरे साथ में चल के वो काम निपटा लेते हैं. सही बात है बच्चों. तो वो चीजें रहती हैं और उसके करस्पॉन्डिंग तुम मेरे को थोड़ा सा गाइस हेल्थ का इशू लग रहा है, तो जो डाटा था वो मैंने मोस्टली कंप्लीट कर दिया है तुम लोगों का. तो अगर तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो उसको डन कर लेते हैं. ठीक है, आई विल पुट मोर एम्फेसिस ऑन दैट, बट एक्सेप्ट ऑफ दैट आई विल टेक द लीव आफ्टर दैट. ओके, सो गाइस मैंने मोस्ट ऑफ चीजें डन कर दी हैं, बट कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड. Okay, so yep. There's this question, sir, how proficient does one need to be any language to be able to contribute in open source and participate in something like GSoC? Okay, so सबसे पहले तो you should be comfortable in data structure algorithms. Then you should have some knowledge about one framework that your organization is using. ठीक है, डीएसएल को तो तुम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो. दैट इज नॉट दैट मच ऑफ एफर्ट के मतलब नहीं सी प्लस प्लस में ही करना चाहिए, जावा में ही करना चाहिए, पाइथन में ही करना चाहिए. डीएसएल को की क्या रिक्वायरमेंट है कि तुम्हारे अंदर अगर ऑप्टिमाइजेशन की नॉलेज नहीं होगी तो फिर क्या करोगे, तुम कुछ गंदा सा कोड लिखोगे. एंड नोबडी लाइक्स द बैड कोड. ओके, एवरीबडी वांट अ गुड कोड. तुम सोचो, तुम अपने प्रोजेक्ट में किसी को बुरा कोड लिखवाओगे क्या? नहीं. तुम क्या कोड लिखवाना चाहते हो कि यार जिसमें ऑसम मतलब ऑसम क्वालिटी हो, एक यू नो कि ये एप्लीकेशन क्रैश ना करे, ये एप्लीकेशन हैंग ना करे, और बड़ा डाटा हो, कैसी भी चीजें हो तो मस्त इसमें चलता रहे. ठीक है, तो अगर तुम्हारे को 30% फीलिंग है कि तुम सही लेवल पे खड़े हुए हो, तो मूव फॉरवर्ड विद इट. क्योंकि बात सिर्फ ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने में उसकी नहीं है कि जीसॉक अभी इसी साल निकालना है या नहीं. ठीक है, तो प्रोजेक्ट में जाओ, अगर तुम्हारे को कुछ इशू लगेंगे भी कि तुम नहीं कर पा रहे, तो वापस आके तुम उन चीजों को कवर अप कर सकते हो ना. रिट्रैक्शन तो हमेशा पॉसिबल है ही कि तुम ट्राई करो, लगेगा कि नहीं हो पा रहा तो वापस आके चीज सीखना शुरू कर सकते हो.
तो अगर तुम्हारे को थोड़ा बता फीलिंग है कि हाँ डीएसएल को ठीक से सीख लिया है, थोड़ा बता फ्रेमवर्क सीख लिया है, ठीक है, अगर तुम वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो जावास्क्रिप्ट में तो थोड़ा रिएक्ट या एंगुलर में कुछ तो सीखोगे ना, अगर तुम्हारे को फ्रंट एंड करना है तो ठीक है, तो कुछ सीख लिया है, उसके बाद में जाके उसके साथ में काम करने की कोशिश कर सकते हो। कहीं पर लगेगा कि नहीं यार ये चीज नहीं वो चीज चाहिए थी, कुछ कमी है, तो आके उसको ठीक कर लोगे। सही लग रही है बात शोभित? ठीक है, कोई और क्वेश्चन? अच्छा चलो अभी टाइम है तो एक चीज और तुम्हारे को बता देता हूँ, एक काफी मस्ती चीज हमारे बारे में बता सकता हूँ मैं। कोड फॉर कॉज है क्या? ठीक है, सो कोड फॉर कॉज एक इनिशिएटिव है मस्त सा, ओपन सोर्स ओपन नॉलेज को हम प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है, हम लाइव क्लासेस देते हैं, डाउट रेजोल्यूशन देते हैं, करियर गाइडेंस दे रहे होते हैं, ओपन सोर्स से करस्पॉन्डिंग वी क्रिएट ऑसम ऑसम प्रोडक्ट्स। हमारे गिटहब पे जाके कुछ कुछ ये देख सकते हो, कुछ कुछ ऑसम चीजें हम और अभी आगे भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे जाके देखोगे तो तुम्हारे को बढ़िया बढ़िया प्लेलिस्ट भी दिखेंगी। ठीक है, देखोगे हमने मशीन लर्निंग के ऊपर, पाइथन के ऊपर, डीएसएल के ऊपर ऑसम ऑसम लाइव बूट कैंप्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग तुम हमारे को यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ ही है ऑलरेडी। ठीक है, लिंक्डइन खोल के देखोगे तुम्हारे को काफी लोगों ने काफी मस्त मस्त प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, वेबसाइट खोल के देखोगे तो उसमें तुम्हारे को साथ में अगर तुम्हारे को फ्री कोर्सेज के करस्पॉन्डिंग रिक्वायरमेंट है यूट्यूब पे ऑलरेडी दे रखे हैं। अगर तुम्हारे को नहीं कि पर्सनलाइज चाहिए, हमारे को लाइव ट्रेनिंग चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास में यहाँ पे हमने अलग से भी कर रखा है। ठीक है, तो इफ यू वांट पर्सनलाइज ट्रेनिंग तो वो भी हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, और टू सी एनी क्वेश्चन दैट वी हैव, नहीं हमारे पास में अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट एक मस्त चीज मेरे पास तुम्हारे लिए है, दैट इज जस्ट वन सेकेंड। एडमिन, एक बार मैंने जो प्राइवेट चैट में कूपन कोड डाला है वो उसको आप एक बार डाल के उसको स्क्रीन पर डाल देंगे क्या? ठीक है, तो आई मेड वन कूपन कोड फॉर यू गाइस, तो इफ यू वांट you can take a look at the things that we are doing। इसमें बात काफी औसम औसम चीजें हमने करा रखी हैं। जनरली अगर आपको ओपन सोर्स में स्टार्ट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जनरली आपको डीएसएल को या फिर एक स्टैक की रिक्वायरमेंट रहती है, सो स्पेशली जो 6 मंथ्स ट्रेनिंग पार्ट है या फिर फाउंडेशनल कोर्सेज हैं, यू कैन टेक अ लुक एट दैट। डीएसएल को सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टार्ट करने के लिए, एंड वी हैव डन फैबुलस जॉब विद दैट। 40 लाइव लेक्चर्स, ऑसम ऑसम चीजें हैं। ठीक है, फीस बहुत प्रिटी मिनिमल फीस है, इफ यू वांट तुम उस कोर्स को कर सकते हो। बट अगर तुम्हारे को फ्री में करनी है चीज, मतलब तुम्हारे को ये पर्सनलाइज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तुम्हारे को ये रहता है कि ठीक है मैं तो खुद से कर लूंगा, मतलब डाउट्स वाउट्स जो होते हैं वो मेरे पास सीनियर वीनियर सॉल्व करा लेंगे, तो सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट हमने यहाँ पे दे रखा है। जैसे डीएसएल को यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है, पाइथन मशीन लर्निंग दिया हुआ है, ओपन सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो दोज आर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी देयर at as well। okay, okay, so yep, comment में sir any recommendation approach to navigate through code base of the project? hmm, हाँ, कोड बेस में जाने के लिए एक मस्ती चीज क्या रहती है, जस्ट वन सेकेंड। हाँ, कूपन मैंने डाल दिया है तो तुम हाईलाइट कर सकते हो उसको। आज रात तक के लिए वैलिड है, 20% ऑफ है उस पे। और बैक टू द क्वेश्चन के, हाँ, कोड में तुम कैसे घुसते हो, तो जनरली कोड बेस एक बड़ा इशू रहता है, बिकॉज काफी बड़ा कोड बेस होता है, और बाकी जो बड़ा कोड बेस है उसका दूसरा इशू क्या है कि अगर कोड बेस बड़ा है तो तुम्हारे को ये नहीं समझ में आएगा कि मैं कितना पढ़ लूं। तो जनरली आई सजेस्ट टू गो फॉर द आउटर पार्ट। ओके, जैसे कि हमने एपीआईज के बारे में बात कर रहे हैं, तुम अगर एक सर्वर, यू आर वर्किंग ऑन द सर्वर और अ क्लाइंट, सो इफ इट इज अ क्लाइंट देन दिस क्लाइंट पुट अप सम एपीआई रिक्वेस्ट।
okay? And if it is a server, then that particular server receives some API request. So start from those endpoints. If it is a library, then the the modules which are exported, those are the endpoints. तो start वर्किंग विद दोज एंड पॉइंट्स कि ये एंड पॉइंट्स है क्या, इनकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, या फिर उन एंड पॉइंट्स, बिकॉज तुम पूरा कोड बेस देखोगे तो तुम्हारे को समझ में नहीं आने वाला, ठीक है? तो तुमने एंड पॉइंट्स देखे, उनके साथ काम करना शुरू किया, सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है? सो दैट मेक सेंस. Can I restrict how people use a open sourced licensed program? Yes, you can. ठीक है, तो अगर तुम्हारे को ओपन सोर्स्ड प्रोग्राम को देखो, लाइसेंस बहुत सारे होते हैं, मतलब थोड़ा सा ये बहुत बेसिक चीज नहीं है जिसको मैं मतलब एक लाइन में समझा सकूं, बट लाइसेंसेस इन ओपन सोर्स अगर तुम सर्च करोगे तो तुम्हारे को काफी सारे लाइसेंसेस मिलेंगे. अपाचे मिलेगा, ठीक है, एंड जीपीएल मिलेगा. लाइक जीपीएल क्या कहता है कि अगर किसी ने जीपीएल यूज किया तो उसको अपना जो कोड है वो ओपन सोर्स ही रखना पड़ेगा, जबकि अपाचे बोलता है कि आप ये प्रोजेक्ट ओपन सोर्स है बट इसमें तुम इसे अपने प्रोजेक्ट क्लोज सोर्स भी बना सकते हो, ठीक है? तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जिसे तुम डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंसेस के हेल्प से कर सकते हो. इवन तुम एक कस्टम लाइसेंस भी बना सकते हो कि ये कोड ओपन सोर्स है, मतलब तुम देख सकते हो, बट ये चीजें अलाउड है, ये चीजें अलाउड नहीं, ठीक है? तो लाइसेंसेस की हेल्प से तुम कुछ भी कर सकते हो. एक कस्टम लाइसेंस भी बना सकते हो जो कि तुम्हारी ही रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई कर रहा हो, ठीक है? दैट मेक सेंस. कूल. ओके, बढ़िया बढ़िया. सही है. तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड. कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे और हो तो पुट कर सकते हो. जो कूपन कोड है वो तुम यूज कर सकते हो आज कोर्सेज को बाय करने के लिए, और ये आज रात तक ही वैलिड है, तो अगर इफ यू वांट टू यूज दैट, डू इट फास्ट, ठीक है? और सॉरी, हाँ दैट्स इट, ठीक है. चलो. हाँ, सही है. सी यू गाइस. बाय.